So we were discussing Hari's theorem. We have constructed a semigroup which is S equals to I cross G cross lambda union 0, and we have seen we have defined a binary operation on that set, and then we have shown that this binary operation is also an associative. So in order to prove that the semigroup S is completely zero simple, we first show that it's zero simple. Okay, so first property S को आपने प्रूव किया वो semigroup है. अब हमें प्रूव करना है कि ये ये simple है, zero simple है, and then we show that it has a minimal non-zero ideal. So S is zero simple. S is zero simple. S is zero simple. So by जो आपने ऑलरेडी वो रिजल्ट एक किया है, by that result okay, by proposition 3.1.1, by proposition 3.1.1 zero simple semigroups की ये proposition है. So it is suffice to show that for all a not equal to 0 in S SAS equals to S. अगर हमने ये प्रूव किया for each a not equal to 0 SAS is equal to S, then it's done. Okay, so clearly SAS is subset of S. Clearly SAS is subset of S. So now let's take any element B in S. Obviously we take a non-zero element because it always contains a zero element, because S contains 0. So the set SAS, it will always contain a 0. So let's choose an element P. Let B not equal to 0 belongs to S. We show that this B, it is in SAS. SAS. Now this A, it's S is actually a consisting of 3 tuples. So this, whenever this A is in S, it means that it is a 3 tuple. So let's take let A be equal to this element. It's I. Then okay, so instead of A, you should write here X. Okay, X not equal to 0. X not equal to 0. और यहाँ पर भी आप B लिख दीजिए, और यहाँ पर आप X C लिख दीजिए. So X not equal to 0, X S X S, और यहाँ पर आप Y लिख दीजिए, such that this Y, it belongs to, okay, this Y belongs to S X S. Okay, so now what is this X actually? X किस type का होगा? Because X is in S, so X is of the following type and it's a non-zero element. So let's this X be equal to, it's of the following type. It's I A lambda, and YB is equal to JB mu. So obviously this since the matrix P is regular, so that means it does not contain a 0 column or 0 row.
So corresponding to these indices I and lambda, okay, I and lambda, we can choose indices nu and k in I such that since p is regular, since that these are the elements, they belong to S, they are non-zero elements, okay, they are non-zero elements of S. Now since p is regular, रेगुलर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी दी है आपको. सिंस p is regular, so each column is non-zero column. Since p is regular, so we can choose so this a and b, they are in G, okay. We can choose two elements, okay, two indices in fact. One is say nu, which belongs to lambda, and second indices is k, which is in I, not k, sorry, it's in I. Such that the following entry of matrix P nu I is not equal to 0, so it's an element of G, and this entry of the matrix P is also not equal to 0. It's a small p. These are the entries of matrix P, okay. So this one P lambda k is not equal to 0. Now we can verify the following. Now let us see this product. Now this product, it's J A inverse, because A is in G, so its inverse exists. PVI, it's also in G because it's not equal to 0, so the entries of the matrix P, they are from G0, okay. So if any entry is non-zero, that means that element must be in G, and it's a non-zero element. Inverse exists nu. Then I A lambda, and this one k P lambda k inverse, P lambda k inverse, P lambda k inverse. Then let's see this product. This is equivalent. तो प्रोडक्ट सबसे पहले मैं इन दो का प्रोडक्ट निकालूंगा. What is the product of these two? It's J lambda. So this is the first and the last entry, and the entry at the center, at the middle. What's that entry? So it's P nu I, okay. It's A inverse. Then P nu I, because of this nu here, this one, or you can say it's omega, actually omega I. This P omega I, A inverse, then P omega I, then you write here, okay. So it's not like this. The first you choose this element, okay, that's A inverse P omega I, gamma I inverse, sorry, gamma I inverse, and then you write here P gamma I, that's the definition of the product. Then write this element A. This is the product of these two elements. Then its product with this, the third element, P lambda k inverse nu. It's P lambda k inverse B is also there, B. This is equal to J. Now this P gamma I inverse, P gamma I, they are the elements of group. He is also element of group, so it's just an identity.
So let's denote it by E, where E is the identity of G, E lambda. Yeah, this J E lambda, okay. Then we have K P inverse lambda K B mu. Now let's see the product of these two elements. This is equal to J and the last element, that's mu here, okay. Then it's E, and these two indices lambda and K, it's P lambda K. Then this element P lambda K inverse, P lambda K inverse and B, and that's equal to J is just B here, B mu. So that's the product of these three elements, it's equal to that J B mu. So you can say this element, this is in S, okay. It's obviously it is in S minus 0, it's a non-zero element of S, and this element is also in S, and this is your X actually, and this is your Y. So thus you can say thus there exist two elements in S, okay. So thus there exist there exists S which is equal to what's the first element here, S equal to J A inverse B omega B gamma I inverse and then gamma, okay. It's J A inverse P gamma I inverse then gamma in S, and T, what's T, what's the next second element, T, what's this one is the second element, K P lambda K inverse B mu. So P this K P lambda K inverse B mu in S such that S X T is equal to Y. I think this is it X? X, yes, it's X. So let me go here first. तो आपने कोई भी x लिया था S से, okay. Clearly this is subset of S X S, okay. It's here SXS. SX is a subset of this. So it's Y here. Y. तो आपको एक और चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर. एक्चुअली मैंने डिफरेंट नेम्स दी इनको, क्योंकि मुझे एक्चुअली y चाहिए ना. y शुड बी इन SAS SXS, ओके. y वी शो दैट ओके y ही मुझे चाहिए. y शुड बी इन SXS y. तो वो आ गया यहाँ पर. अगर आप यहाँ देखोगे इस पेज पर तो आपका आ गया यस. सो दैट मीन्स y belongs to SXS, and thus it's fine, and thus we have SXS is equal to S. So therefore S is 0 simple. Therefore S is 0 simple. तो आपने इसमें किया क्या एक्चुअली, जीरो सिंपलिसिटी के लिए आपको ये प्रूव करना है. For each x not equal to 0, SXS must be equal to S. SXS तो है ही सबसेट S का. अब आपको एक्चुअली इसका कन्वर्स चाहिए, रिवर्स इंक्लूजन यू कैन से. सो लेट्स चूज एनी y नॉट इक्वल टू 0. जीरो एलिमेंट तो ऑब्वियसली इसमें है ही. अगर y 0 होगा तो SXS में तो है ही 0. दैट्स ट्रिवियल. So that's why we are choosing the non-zero element. So let's choose y non-zero element in S. We show that this y is in SXS.
अब चूंकि x s में है तो x इस टाइप का होगा, इट्स a 3 tuple, y is also a 3 tuple, and they are also non-zero, so it means that, so by definition these two elements a and b, they are in J, and I and J, they are in the index set I, lambda and mu, they are in the index set lambda, this lambda, okay. So since P is regular, it's given that P is a regular matrix, so that means the matrix P जो है आपके पास, इसका कोई भी रो जीरो रो नहीं है, इसका कोई भी कॉलम जीरो कॉलम नहीं है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें मैथमेटिकली, जो मैंने यहाँ पर एक्चुअली किया है। तो मैंने क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट दिस in lambda and k in I, such that these two elements, this element, this is the entry of the matrix, and this one is also the entry of matrix, they are not equal to 0, because each column is not equal to 0 and each row is not equal to 0. So now let's see this product of the three elements of S. Okay, so this element, ये जो element है ना, ये SAS का element है, because this element is in S, this last one is also in S, and this is your X, so this element is in SXS, not in SAS, SXS. So we'll show that this element, ये जो आपने element यहाँ पर लिखा है, ये actually Y के बराबर है। अगर ये हमने प्रूव किया कि ये Y के बराबर है, इसका मतलब है कि Y SXS में होगा। तो सिर्फ आपको ये कंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना है, क्या एक्चुअली आपको देखना है कि इसका जो प्रोडक्ट है ना, इन तीन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, जो इसका जो इसकी मिडिल एंट्री है, दैट शुड कम आउट टू बी बी, वो बी के बराबर आना चाहिए, वो लास्ट एंट्री जे और म्यू आना चाहिए। जे और म्यू तो इट्स वेरी सिंपल, आपने क्या लिखा, आपने जे और ये लिया आपने ओमेगा दिस न्यू, ये दो एंट्रीज, और इसके बाद आपने यहाँ पर आई लैम्डा लिया, डिफरेंट आपने चूज की, और फाइनली आपने म्यू लिया, क्योंकि एक्चुअली आपको जे म्यू चाहिए इसकी ना, जो ये जो थ्री टपल है ना, इसकी जो लास्ट दो एंट्रीज है वो जे म्यू चाहिए। तो इस तरह से आपने ये लास्ट एंट्रीज को फिक्स कर दिया, इट्स वेरी सिंपल है। तो जे ओमेगा देन आई लैम्डा, इन दो का प्रोडक्ट जो होगा उसमें जो एंट्रीज लास्ट आ जाएगी वो हो जाएगी जे लैम्डा, बट यू वांट जे के, इस तरह से जे म्यू, तो इस तरह से आपने यहाँ पर के और म्यू, बीच में आप कोई भी एंट्री रख सकते हो। तो जे और म्यू आपको लास्ट में रखना है। तो आप जरूर कि आप ओमेगा लो, आप कोई भी एलिमेंट लो, मतलब जो आपको इजी लगी, आई लैम्डा एनीथिंग यू कैन चूज। अब मसला एक्चुअली किस एलिमेंट का है, जो मिडिल एलिमेंट है, दैट शुड कम आउट टू बी पी। तो यहाँ से आपको ए प्रोडक्ट कैसे आप डिफाइन करते हो, हाउ डू वी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टपल्स। हम क्या लेते हैं, हम जो यहाँ पर जो मिडिल एंट्री है इस थ्री टपल की, इन दोनों एंट्रीज को लेते हैं, इन दोनों एंट्रीज को, ओके, इसको भी और इसको हम एंड में रखते हैं, और इसमें जो मिडिल टर्म है, इस एंट्री की जो मिडिल टर्म है वो क्या लिखते हैं, वो है पी, और जो इंडिसेस आपने नहीं लिया, आपने न्यू और आई नहीं लिया, पी न्यू आई, ओके। तो इस तरह से आपने ये प्रोडक्ट निकाला, ये इसके बराबर गया। सो दैट मीन्स दिस सेमी ग्रुप इज जीरो सिंपल। अब आपको प्रूव करना है कंप्लीटली जीरो सिंपल। कंप्लीटली जीरो सिंपल के लिए आपको क्या चेक करना है, इट मस्ट पोजेस नॉन जीरो मिनिमल आइडियल, नॉन जीरो मिनिमल आइडियल। सो दिस एस, दैट्स लास्ट स्टेप, एस पोजेस नॉन जीरो मिनिमल, दैट्स प्रिमिटिव एक्चुअली, मिनिमल आइडेम्पोटेंट, नॉट आइडियल, idempotent, okay, that we call the primitive, okay, primitive element. In fact मैं ये प्रूव करूंगा इसका हर कोई नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट जो है, हर कोई नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट जो है इसका, वो एक्चुअली प्रिमिटिव, वो मिनिमल है। तो यहाँ से आपको एग्जांपल एक ऐसे पोसेट की एग्जांपल मिलेगी जिसका एक सबसेट ऐसा है, आइडियल्स का सबसेट, दिस आइडेम्पोटेंट्स का सबसेट, जिसका हर कोई एलिमेंट मिनिमल है। सो हाउ डू वी डू दैट। अब कोई एलिमेंट कब आइडेम्पोटेंट होगा और कब वो नॉन जीरो होगा, ओके, पहले हम इसको करेक्टराइज करेंगे, वो किस टाइप का होगा, फिर हम इसको उसकी डेफिनेशन आगे अप्लाई करेंगे। सो let
सबसे पहले चेक करेगी क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँगा कि ये इसका नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट है, तो मुझे उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, उसकी प्रॉपर्टीज की क्या वो एग्जिस्ट हो रही है इस में, वो मुझे चेक करना। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस आई ए लैम्डा बी नॉन जीरो idempotent of S. Okay, that means it is an I cross G cross lambda, which is the definition. Okay, definition of S, I cross G cross lambda union zero, right? It's non-zero element. So let this be a non-zero element of S, and it's an idempotent. Then we must have this thing, I a lambda, this must be equal to I a lambda, because it's an idempotent. But here you can apply the definition, it's here I and lambda. Let's fix first these two last elements. Now what is the element, what's this middle entry? It's equal to A first, then you write P, and then you take these two indices, lambda I, then you write A here. That's the definition of the product, I a lambda. Now let's equate these two tuples. So I is I, lambda, that's okay, but from this equation, let's see this. P lambda is non-zero, okay? It's a non-zero element. It's a non-zero element. So why it's non-zero? Because it's equal to A, okay? So P lambda is non-zero. तो इन जनरल जब इसके एलिमेंट्स आप लिखोगे ना, ये ज़रूरी नहीं कि ये जो P lambda I हो ये नॉन ज़ीरो हो, बिकॉज जो मैट्रिक्स P है उसकी जो एंट्रीज है वो G0 से आ रही है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। बट वेन एवर यू आर टेकिंग द एलिमेंट ऑफ S विच इज इक्वल टू I क्रॉस G क्रॉस लैम्डा, सो द एलिमेंट, यस सर फिर से बोले, एक्चुअली कॉल आई थी, आपने बोला ना कि नॉन जीरो है। ओके, तो ये मैं कह रहा हूँ ये नॉन जीरो, P lambda is not equal to 0. Why it's not equal to 0? For if it's equal to 0, then A into 0 into A is equal to 0. So for that means if you equate these three tuples, you will get A equals to 0, which is not the case. A is not equal to 0 because A is in G. A is in G. So this implies A, P lambda I, A equal to A, and which implies you can apply the cancellation law, because now you are in groups, they are the elements in groups. This is the equation in group, okay? So you write here A P lambda I is equal to identity, which gives that A is equal to P lambda I inverse. So what is the idempotent element क्या आ गया, ये A किसके बराबर आ गया, A आ गया P lambda inverse के बराबर. So thus this I A lambda, it's equal to I P. Is it P lambda I? See, it's P lambda, okay? It's P lambda, P lambda I inverse then lambda. This is the idempotent. Is the idempotent, is the non-zero idempotent, non-zero idempotent of S. ओके, ये इसका नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट है. आप इसको चेक भी कर सकते हो ये आइडेम्पोटेंट है. you can take its product twice, you will see that the product will remain the same. So if you want to verify this, verification, let's see the verification. It's I P lambda I inverse lambda, then I P lambda inverse lambda. What is the definition of product? So it's I, then you take these two, P lambda I, P lambda inverse and P lambda, जो यहाँ पर जो इसका जो सेंटर है ना इस इन तीन एलिमेंट्स, it's P, then these two indices P lambda I. Okay, then again you write this P lambda inverse, that's the definition of the product, and it's here lambda.
it's lambda here, and this thing it's equal to I P lambda I inverse, because the product of these two elements is identity and lambda. तो ये इसी के बराबर आ गया ना, बस. तो ये इसका नॉन जीरो आइडेंटिटी है. अब आपको प्रूव करना है कि इसमें मिनिमल नॉन जीरो आइडेंटिटी है. इनफैक्ट वी विल शो दैट एवरी नॉन जीरो आइडेंटिटी is minimal. So next we will show that every non-zero element of this S, every non-zero idempotent, right? Non-zero idempotent okay, idempotent of S is minimal. So let E equal to I P lambda I inverse, then lambda be non-zero idempotent of S. ओके, हमें प्रूव करना है कि ये मिनिमल है. नाउ लेट F be equal to, let's take the another non-zero idempotent. So that idempotent is J P mu J inverse and mu. तो idempotents की representation है be a non-zero idempotent, be a non-zero idempotent such that F is related to such that F is less or equal to E. तो अभी प्रूव करा कोई भी F ऐसा एग्जिस्ट नहीं हो रहा. सपोज देयर इज सच F less or equal to E, will show that F is equal to E. Then by definition this means that F is equal to E. F is equal to F. It's F or E. So when it's is it E? Okay, so suppose this thing is equal to F. That's the definition of relation. So we show that E is equal to F. हम प्रूव करेंगे F E के बराबर ही है. F E के बराबर ही है. तो इसके लिए हम ये प्रोडक्ट चेक करेंगे. we will see the product and we will see that this product is equal to actually F. It's equal to F. So let's apply this. Let's substitute the values of F and E in these two equations, and we'll see that this gives F means it's J P mu J inverse mu. Okay. Then it's I P lambda I inverse lambda is equal to I P lambda I inverse lambda product J P mu J inverse mu, and that's equal to F. What's your F? F is equal to J P mu J inverse and mu. So this implies, let's see this product here. Okay, so this one it's here mu, or let's see this one. Okay, let's see this I, or you can see this it's here J. Okay, let's do both the products here. Let's see both the products here. Okay, this is J here and this is lambda, and this one it's P mu J inverse, then P mu I, P mu J inverse, P mu I, mu J inverse, then P mu I, then P lambda I inverse, P lambda inverse. This product, it is same as this product.
I, then this one, this product is equal to P lambda I inverse, then P lambda J, then P mu J inverse, then it's mu here, and that's both are equal to this J P mu J inverse and mu. So if we equate these three tuples, okay, so we will get I equal to J and lambda equal to mu, and now we equate the middle term, middle entry of these three tuples, and we'll see that if we equate first and third, so this gives, let's see here, this gives this I equal to J and mu equal to lambda. This gives I equal to J and lambda is equal to mu. So also from these equations we have, let's equate the first and third. We'll see that it's P mu J inverse, P mu I, P lambda I inverse equal to P mu J inverse, and you will see that this P mu J inverse, P mu J inverse, they will cancel out, and it will obtain the following: P mu I, P lambda I inverse equal to the identity. So this gives P mu. So let's do this here. It's a P mu J inverse, okay, P mu J inverse, P and P mu I, P lambda I, P mu I, P lambda I inverse. This is equal to P mu J inverse, and let's see now first and second, it's P mu J inverse, P mu I, P lambda I. Now second and last, sorry, P lambda I, P lambda J, P lambda I, P lambda J, P lambda I inverse, P lambda J, then it's last P mu J inverse, P mu J inverse. This is equal to the same P mu J inverse. This gives P mu I is equal to P lambda I, P mu I is equal to P lambda I, and here you can see that P lambda J is equal to P mu J, P lambda J is equal to P mu J. So actually आपको प्रूव करना E equal to F, okay? So therefore what's E? Therefore E equal to, okay, P mu J is equal to P lambda I, कैसे आ गया? P mu I equal to P lambda I, सर ठीक है? ये कैसे आ गया? Okay, from this equation P, ये जो है ना P mu I और P mu J इनवर्स P mu J, ये कैंसिल हो जाएगी, ओके? तो आपके पास आ जाएगा ये, okay. So now let's see this I, what's E? Is I lambda, okay? P lambda I, then lambda, हमें ये देखना है किसके, I आ गए J के बराबर. What's lambda I? Is it mu J, P mu J? ये हमें देखना है. P mu J, lambda I किसके बराबर है? P lambda I. This is P lambda I. It's P mu I, and I same as J, so it's P mu J. It's P mu J equal this is equal to P mu J, and this lambda is J. This lambda is equal to mu. ये mu के बराबर आ गया, हमने अभी चेक किया है. This is mu, and that's equal to F. So thus whenever E is lesser equal to F or F is lesser equal to E, so thus F lesser equal to E implies that F equal to B. So therefore E is minimal. Therefore E is minimal.
ये ई minimal आ गया, and hence S is, and hence S is completely zero simple. तो आपने यहाँ से ये देखा, ये जो कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप आपने कंस्ट्रक्ट किया है, इसका एक ही नॉन जीरो आइडेंटिटी मिनिमल नहीं है, हर कोई नॉन जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मिनिमल है. और इनफैक्ट यू विल सी दैट जब भी आप कोई कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप देखोगे, उसके पास एक ही मिनिमल आइडेंटिटी नहीं होगा, नॉन जीरो आइडेंटिटी, उसका जो भी नॉन जीरो आइडेंटिटी होगा वो मिनिमल होगा. वही एक्चुअली रीज ने किया है, रीज ने एक्चुअली प्रूव किया है जो भी आपके पास कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप है वो एक्चुअली इसी टाइप का जो अभी आपने कंस्ट्रक्ट किया है. और इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है जो कि क्लिफोर्ड प्रेस्टन ने दी है इन 1961, जो उनकी बुक है. तो उसमें इसकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन उन्होंने यूज की है. सो दैट्स द नोटेशन फॉर क्लिफोर्ड सेमी ग्रुप, दिस कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप. So let's see this notation, okay? The above constructed, the above construct completely zero simple semigroup is denoted by this notation. This S is equal to this one, m0 then. अब क्योंकि इसमें 3-4 चीजें आपकी, एक तो ग्रुप है इसमें, second we have two index sets I and lambda, and finally we have this the regular matrix P. इससे हमने इसको डिनोट किया है. और ये जो नोटेशन है ना, ये क्लिफोर्ड और प्रेस्टन ने दी है ये नोटेशन. एंड विल बी कॉल्ड, एंड इस सेमी ग्रुप को क्या कहते हैं, ये जो सेमी ग्रुप है जो कि है एक्चुअली कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप, मगर इसका एक स्टैंडर्ड नाम है, एंड विल बी कॉल्ड I क्रॉस लैम्डा रीज मैट्रिक्स सेमी ग्रुप, क्योंकि ये रीज ने कंस्ट्रक्ट किया, रीज मैट्रिक्स सेमी, रीज मैट्रिक्स. So now we try to prove this converse, जो कि which is based on 4 lemmas, 4 or 5 lemmas, जो आपको करने हैं, then you can complete the proof of the converse part. So the next theorem is the Rees theorem, okay? Next theorem is the Rees theorem, in which we will see its converse actually. So statement of Rees theorem, let's see this. So Rees theorem. Let G naught be a zero group, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है. So after this zero, it's a numerical zero here, zero group, okay? This is a notation as zero group. And let I lambda be non-empty sets, be non-empty sets. They may be finite, they may be infinite, depending on the semigroup. And let P, which is equal to P lambda I matrix, P lambda I be lambda cross mu, be lambda cross I matrix, with entries in G0, with entries in G0, and suppose that this P is regular. Suppose that this P is regular,
in the sense that each column is non-zero, so in this, and each row is non-zero, in the sense that so I will write that in the mathematical form, in the sense that for all I in capital I, there exists lambda in capital lambda such that P lambda I is not equal to 0. And now this is for this is for row, okay, each this is for is it for row, or what's the matrix? Matrix is of the order, it is, so lambda cross I, lambda stands for row, so it's column actually, yeah, each column, for each column, okay. And for all lambda in lambda, okay, this is capital lambda here, there exists I in I such that this again the P lambda I is not equal to 0. So that's the meaning of regular here. Is a regular matrix means this: each row and each column is not equal to 0. And let S be equal to I cross G cross lambda. So it's capital lambda here. Lambda union 0. It is 0 semigroup which contains 0, and define on S and define a multiplication. Define a multiplication on S by this rule. So जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है एक्चुअली प्रोडक्ट, अब यहाँ पर मैं फिर से उसको यहाँ पर मेंशन करूँगा। तो मैं वहाँ पर इसका नंबर भी लिख सकता, उस नंबर को हम रेफर कर सकते यहाँ पर, जो इसने किया एक्चुअली बुक ने, इसने नंबर को ही रेफर किया है। I lambda then G B mu, this product it's equal to I, then write here P A, then P lambda J B, okay. Then mu, it's a case if P lambda J is not equal to 0, P lambda J not equal to, in case it is equal to 0, we take its value 0. If P lambda J is equal to 0, and the product with 0 है ना, वो भी हमें डिफाइन करना है। I A lambda 0, it's equal to 0 times I A lambda, and the product is equal to 0, and that's same as 0 0. Okay, so then this S से कंप्लीट जो हमने अभी प्रूव किया एक्चुअली, देन ये पार्ट हमने किया है, मैंने अब इसका स्टेटमेंट लिख दिया। देन S is a completely zero semi, okay, completely zero semi, and conversely that's very important actually, यहाँ तक आपने कहते हैं conversely every completely zero semigroup, every completely zero semigroup is isomorphic to the Rees matrix semigroup, is iso जो अभी आपने semigroup S ऊपर लिया है, is isomorphic to a
rees matrix semigroup constructed above. So अब देखिए कन्वर्स क्यों इंपॉर्टेंट, आपके पास कंप्लीटली जीरो सेमी ग्रुप है, ओके, कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप, और जो अभी आपने जो सेमी ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया उसमें ग्रुप की जरूरत पड़ती है, तो आपको कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप से एक ग्रुप को कंस्ट्रक्ट एक्चुअली करना है, फिर वो आई और लैम्डास को कंस्ट्रक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सी दैट दिस सेमी ग्रुप एस जो आपने लिया है कंप्लीटली जीरो सिंपल सेमी ग्रुप, इट्स आइसोमॉर्फिक टू दैट टाइप. So to prove this theorem, we prove the following lemmas. We first prove the following lemmas. So I will prove only one lemma today. इस लेमा के सिमिलर में आपके पास तीन लेमास है, और एक लेमा से तीन लेमास एक्चुअली फॉलो हो रही है, वो एक लेमा में यहाँ पर दिखा दूंगा. प्रूफ सर आज इतना ही पढ़ते सर, इतना ही करेंगे आज. कल एग्जाम भी है. ओके कोई बात नहीं, इसको हम आहिस्ता ही करेंगी, इसमें हमें जल्दी